Okay, so this is going to be the first chapter, and in this chapter, we are going to be looking at the physical quantities and units. Okay, so it is measuring quantities and units. Okay, or you can say that the measurements and the units. Okay, okay, and in this chapter, we will going to discuss some like two to three things, four or actually five things, right? जिसके अंदर एक चीज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ अभी, सही है? So if I let me just change it to this one, um, I have the other one with me. ये रहा. Okay, so सबसे पहले जो है वो हम फिजिकल क्वांटिटीज देखने वाले हैं, सही है? फिजिकल क्वांटिटीज. अरे यार इतना ज्यादा फैंसी क्यों कर रहा है ये? सही है. एंड द सेकंड थिंग विल गोइंग टू बी physical quantities, right? Physical quantities and units, and then we're going to be looking at the scalars and vectors. Okay, and then we'll be going through the vector calculations. Okay, and then after vector calculation हमने देखना है prefixes, prefixes, और शायद हम पहले देख लें. सही है. एंड उसके बाद हमने देखना है लास्ट चीज. The last thing will going to be the errors and uncertainties. Okay, so in this chapter हमने ये सारी चीजें करनी है. सही है. अच्छा, अब ये जो पांच चीजें इसके अंदर से मैंने अनसर्टेनिटी अभी नहीं करवानी है. सही है. अनसर्टेनिटी जो है वो मैं बाद में करवाऊंगा, राइट? लाइक मे बी लाइक एट द एंड ऑफ द सिलेबस. ओके. और क्योंकि जो है ना अनसर्टेनिटीज के अंदर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ मतलब लाइक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं जो कि अभी हमारे पास नहीं होंगी इन द बिगिनिंग. सो इस वजह से एंड बस ये वजह. अच्छा जी, चलो आ जाओ भाई, इसको भी शुरू करते हैं. एंड दिस शुड बी ऑल इन ब्लू कलर. ओके. सो ये हमारे पास जो है ना इस चैप्टर के कंटेंट है. सही है. नाउ अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं भाई. क्वांटिटी. क्वांटिटी क्वांटिटी क्या होती है आप लोगों के ख्याल में? एनीबडी हैज एनी आइडिया व्हाट इज क्वांटिटी? सर किलोग्राम मास। लाइक द किलोग्राम. ओके, ओके, फाइन. ओके. एनी अदर? किसी और के पास कोई आइडिया? अगर तो अच्छा, अब देखो सीन ये है कि क्वांटिटी के अंदर जो है ना हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत वास्ट रेंज है. ओके. बट तो इसी वजह से क्वांटिटी को मतलब एनीथिंग दैट वी कैन, मतलब कोई भी किसी भी चीज का नाम हमने दिया होता है हम उसको बेसिकली हम उसको क्वांटिटी कह रहे होते हैं. सही है. बट वी जनरली distribute the quantities into two types: the physical quantities and the non-physical quantities. Okay. The physical quantities. Okay. And non-physical quantities. Okay.
ओके, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, देखो जो होशियार बैठ के क्लास में सिर्फ सुन रहे हैं, देखो मैं सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही है। प्लीज ट्राई टू राइट देम डाउन एवरीथिंग जो भी मैं लिख पा रहा हूँ, सही है, ताकि जो है ना इससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, वरना अदरवाइज इफ यू आर जस्ट लिसनिंग द थिंग्स एंड यू आर नॉट राइटिंग डाउन, देन यू विल easily get distracted from the things nearby you, okay, or surrounded or around you, सही है। तो इसलिए प्लीज लिखते रहना, सही है। और जो भी चीज लाइक देखो, लिखने का जो तरीका होता है, लेक्चर नोट करने का तरीका होता है, वो ये होता है कि फर्स्ट राइट वट एवर द टीचर इज राइटिंग, ओके, देन राइट वट एवर यू थिंक is understandable or is understanding for you, okay, just write them down, अलग से एक पॉइंट में लिख लो जो भी टीचर कह रहा है, but teacher is not writing those points, but to you it seems like quite understandable, then just write them down, okay, and then try to understand। सिर्फ वो मत लिखो जो टीचर बोल रहा है, जो टीचर लिख रहा है, बल्कि just try to use your brain कि उसको किस तरह से और ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, okay, clear? So in the non-physical quantities, we usually don't discuss because they're non-physical actually. Like they're mainly related with your emotions, feelings वगैरह से। सही है, friendship, hatred, okay, love, ये सब चीजें जो है ना तुम्हारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ओके, तुम इसको मेजर नहीं कर सकते हो, इट इज रिलेटेड विद योर इमोशंस, वाइल और इट इज राइट, मतलब वो एक ज्यादातर जो है ना वो हो सकता है, क्या बोलते हैं अपना, एक ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी हो सकती है, बट वी आर डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटीज, दैट एनीथिंग दैट यू कैन मेजर is a physical quantity, okay, or is a quantity, or is physics, okay। So फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में हम लिखते हैं क्वांटिटी, ये आई क्यों आ रहा है, क्वांटिटी that can be measured, right, or calculated, okay, is a physical quantity, okay, quantity, definition is not important, okay। फिजिकल क्वांटिटी ये हो गई, सही है। कौन सी क्या हो गई फिजिकल क्वांटिटी, दैट कैन वी कैन मेजर, okay, and for measurement we require the measuring instrument, right, and calculation, and for calculation we require an equation, okay, clear? सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज हो गई, एक वो क्वांटिटी की जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, और एक वो क्वांटिटी जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें जो है ना कोई कैलकुलेशन की कोई ना कोई चीज़ें चाहिए होंगी, ओके, कैलकुलेशन के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए होगा, राइट। अच्छा जी, सो सो बेसिकली हमारे पास ये दो चीज़ें हो गई, राइट, मेजर्ड क्वांटिटी एंड कैलकुलेटेड क्वांटिटी, राइट। अब मेजर्ड क्वांटिटीज जो होती है ना, उसके अंदर मेनली जो जो इस मेन जो बेसिक मेजर क्वांटिटीज थी, दे आर 7, ओके। सो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरेबल क्वांटिटीज आर 7 quantities, okay, known as the base quantities, okay, quantities, okay। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने जो है ना कुछ क्वांटिटीज को बिल्कुल स्टैंडर्ड बना दिया, रेफरेंस बना दिया, ओके। जैसे तुम्हारे मैथ्स के अंदर जो है ना कुछ नंबर्स हैं 0 to 9, सही है, दे मेड दैट एज रेफरेंस क्वांटिटीज, ओके। अब वो रेफरेंस फिक्स है, राइट, और
उस उन रेफरेंस क्वांटिटीज या वो रेफरेंस नंबर्स जो है वो फिक्स हैं। अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें कोई भी नंबर लिखना है, सही है, वो उन 10 नंबर्स में से आएगा फ्रॉम 0 to 9। कोई बंदा कितना भी अमीर हो जाए, राइट, लेकिन वो जो है उन 9 या 10 नंबर्स के दरम्यान ही रहेगा, राइट। यू जस्ट नीड टू रीअरेंज देम, राइट। तो अमीरी जो है ना वो जस्ट उन 9-10 नंबरों के अंदर है। ओके, इट इज जस्ट द फैक्ट दैट यू आर अरेंजिंग इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, तो वो उसकी वैल्यू बन रही है, राइट। तो सिमिलरली जिस तरह से अल्फाबेट्स हैं, राइट, अब हमने जो है ना जो आपके अंग्रेज थे उन्होंने जो है ना बैठ के कुछ 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स डिजाइन कर दिए, राइट। अब ए अगर आप यूं बना रहे हो, राइट, ए अगर आप यू बना रहे हो तो नोबडी आस्क ए क्यों यू बना रहे हो, व्हाई डू वी हैव द मिडिल डंडा इन ए, राइट, वी डोंट लाइक, नोबडी आस्क, ओके। बट हमें एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। सिमिलरली इन फिजिक्स वी हैव द स्टैंडर्ड कॉल्ड द 7 स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, ओके, जिसको जो है ना स्टैंडर्ड बनाया गया है, right, and they're measured precisely and accurately, okay, like these quantities। और फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास अब जितनी भी quantities आती हैं, they are related by these 7 quantities somehow, okay, out of which five are in our syllabus, okay। तो जरा उसको भी देख लेते हैं। मास टाइम टेम्परेचर। सॉरी, ये बात नहीं आ रही भाई। अब मैं कह रहा हूँ ये मास टाइम टेम्परेचर ये ओए है ना। ओए, हाँ जी हाँ जी यार, तुमने तो मेरी स्क्रिप्ट लीक कर दिया। तुम्हें कौन बता रहे हैं ये सब चीजें? ओके। सर मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे श्योर नहीं था कि ये इसी से है। ओके, तो मैं तो पूरी। चलो हाँ, ऐसा ही ऐसे कह रहे हो आप, उसको देखते हैं। सही है, सो हमारे पास जो है, कम ऑन, ओके, so if we are discussing the physical quantities, okay, okay, so हमने कहा कि भाई यार रेड में जो है, चलो ये ले लेते हैं। मेनली जो है वी हैव क्वांटिटी, ओके, एंड यूनिट्स, ओके। So the first quantity is going to be length, okay। Length can be in the form of distance, in the form of diameter, in the form of extension, in the form of compression, in the form of displacement, in any other word. Okay. So be careful, वो किसी भी word में दे रहा है, confuse मत होना please। The unit remains in meter. Okay. Meter. Okay. Represented by m. Okay. So length sometime आपको जो है ना लेंथ की फॉर्म में दिख रही होगी, सही है। लेंथ कभी कभार वेट की फॉर्म में दिख रही होगी, लेंथ कभी कभार हाइट की फॉर्म में दिख रही होगी, ओके। लेंथ कभी कभार जो है वो डायमीटर की फॉर्म में दिख रही होगी, लेंथ कभी कभार सेपरेशन की फॉर्म में दिख रही होगी, ओके। लेंथ कभी कभार रेडियस की फॉर्म में दिख रही होगी, सही है। लेंथ कभी कभार जो है वो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दिख रही होगी, सही है। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये इन जैसे और जितने भी वर्ड्स हैं, दे आर बेसिकली यूज्ड टू रेफर द लेंथ, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके। सेकंड चीज तुम्हारे पास है मास, ओके, ओके। सो द यूनिट फॉर द मास इज किलोग्राम, ओके, नॉट ग्राम, प्लीज केयरफुल। कुछ बच्चे जो है ना लेंथ का जो है ना बोलते हैं ओके मीटर है, एंड यहाँ पे बोलते हैं इसी वजह से जो है ना किलोग्राम के बजाय ग्राम होना चाहिए, ओके। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ मेमोराइजिंग द क्वांटिटी, ओके। बी केयरफुल, ओके। Okay, the third quantity is it is going to be length mass in time, okay, in measured in seconds, okay,
for temperature. Temperature. Okay. So this temperature is also known as sometime with thermodynamic temperature. Okay. Thermodynamic temperature. But for your AS level, if you write temperature only, then it is also acceptable. But the correct terminology is the thermodynamic temperature, because thermodynamic temperature actually refer to the specific type of temperature taken, or a specific type of a scale that is used, or that is basically the standard um in scientists. Okay. So, and the unit is the Kelvin. Okay. Kelvin. It is not the Celsius scale, or it is not the Fahrenheit scale. It is the Kelvin scale that is common in the scientists. Okay. And the fifth quantity is going to be your electrical current. Okay. Electrical current. Okay. Kindly remember that the current itself is just the disturbance in a medium. Okay. Correct. Current itself is just the disturbance in a medium. Okay. So for that, you have to specify which medium you are considering. Okay. Let me just write the definition of current. Okay. So current is a disturbance in a medium. Okay. Now, if the medium is water, then you can say water current. Okay. Like the waves and all that. Okay. If you have the current in the air, you can say that as the convectional current. मे बी आप लोग ने नाम सुना होगा, तुम लोग में किसी ने वो पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है तुम. Okay. Convectional current. Okay. And if you are in an electronic medium or electrical medium with a lot of electron roaming around, and you applied some sort of potential difference or voltage, and the electrons start moving from one point to another point, so that specific type of electronic medium, where when you generate the disturbance, is called the electrical current. Okay. So you have to mention the electrical current. Okay. If you write the current, then most of the time the examiner accept your answer. Okay. So don't worry, I'm just explaining that current is the generalized term. Okay. It is not the specific with electricity only. Okay. Now the unit for it is amperes. Okay. Ampere presented by A. Okay. So these are some standard quantities that we have in our physics. Okay. And all of the other quantities are basically dependent upon these five quantity. Okay. So, and those quantities are called the derived quantities. Okay. Those quantities are called the derived quantities. Ooh, 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 ooh. Okay. So we have the derived quantities. Derive quantities. Okay. So the derived quantity is basically, okay, right here. Mm. So the derived quantity is basically the quantity that is basically the product or the quotient of the two other quantities. Okay. Derived quantities are supposed to be, okay. So this quantity is supposed to be the two quantities, this quantity. So derived quantity is supposed to be
a quantity, a quantity that is the product of the quotient quotient of some other quantity. Okay, you should know that the product means the multiplication of between the two quantities. Okay, the product means the multiplication between the two quantities, like if A is equals to B times C. Okay, and the question mean the division of the two quantities. Okay, the question mean the division of the two quantities. A is equals to B over C. Okay, this is a question form, right? Not a not a question, it is a question. Okay, now in the derived quantities, we have a lot of quantities, like we will going to list down all the quantities that we have in our AS. Okay, so let's just write them down. Let me draw the lines. Okay. Mm, this is going to be for the formula and the unit conversion. And okay. Okay. So the first is the quantities that we are going to look at. Okay. And since they're the derived quantity, so there should be some derivation or formula. Formula. So we write the formula first, and then their base units or their drive unit first. Drive unit, and then their base units. Okay. Mm, I can take this to this side, this to this side, and the base unit right here. Okay. Now, let's start with the very first quantity, and that is the displacement. Okay. क्या मेरे पास रेड अच्छा रेड मुझे मिल सकता है? लेट मी एक सेकंड देना जरा. Do I have something that can match with it? Nope. Okay, आ जाओ भाई. ब्राउन से लिख लेते हैं क्वांटिटीज के नाम. ओके, सो मेरे पास जो है द फर्स्ट थिंग इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, दिस, कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट. ओके, फॉर द डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कोई ड्राइव क्वांटिटी नहीं है, बेस क्वांटिटी है. सही है. हमें वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, स्पीड या वेलोसिटी. स्पीड, ओके, या फिर वेलोसिटी. बोथ शेयर्स द सेम फार्मूला. वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. Okay, over time, and their base quantity and drive quantity are the same, and that is meters per second and meters per second. Okay, this is the first quantity. Okay, the second quantity is, let's say, momentum. Okay, moment. Anybody remember the formula for momentum, please? Yes.
Anybody remember the formula? velocity, Sorry, velocity velocity. into mass. Very good. So momentum is basically mass times velocity or velocity times mass. Okay. Now we know that the unit for the mass is kg. Okay. So kg, and the velocity unit for the velocity is what we have discussed earlier, and that is meters per second. Okay. So this is its drive unit as well as the base unit. Okay. So yeah, but sometime we use the drive units of the drive unit of the momentum as Newton second, right? But हम ये भी लिख देते हैं साथ में, right? The common one is this one, okay? Okay, guys, that clear? Now, the other quantity is, let's say, the acceleration, okay? Can you guys recall me the formula for acceleration, please? V minus U upon T. Okay, can I write a change in velocity instead of v minus u? Yes. Okay, over the change in time, and then v minus u over t. Very good, Ahmed. Ahmed, Taha. Okay, Taha. So, can you guys, acha, you know that the base unit for the drive unit for the acceleration is meters per second squared, right? But can you guys prove it? Like थोड़ा सा अजीब सा है. But if you look at the equation, so for the first velocity, it should be meters per second. For the second velocity, it should also be meters per second, and divided by per second, and divided by time second. Okay, but please keep in mind whenever you are solving the physical quantities in units, you are not allowed to use the simple math principle directly, right? Like agar ye do quantities they are subtracting, so you are not allowed to make them zero, okay? Because you are actually subtracting the velocities and not the unit, okay? So when you subtract the velocity, let's say your car moving with 10 meter per second initially, and then its velocity got changed, and you are finding the change in velocity, and the final velocity was let's say 4 meter per second, right? So when you find the change in the velocity, so the change in the velocity will be 6, and also it will also be the velocity, it will also the velocity, right? So since it is a velocity, so always keep in mind that whenever you find the change in a quantity, the change in a quantity will have the same unit as a quantity, okay? Very important, okay? I'm writing some rules right here. The change in the quantity have the same unit as the quantity, okay? Itself, okay? Is that clear? This is a rule, okay? So, but for the acceleration, the units are the same, meters per second square, okay? Now, let's move on to the force. So we know that we have the two formulas relate the force. The first formula is the force is equals to change in momentum over change in time, okay? And the second formula is the mass times the acceleration. Both are basically the same thing. They're just the other one is just the simplification of the first one, okay? Right. Now, we know that it is well known that the drive unit for the force is the newtons. Actually, it's not the drive unit. It is not the correct drive unit for the newton, okay? The correct drive unit of the newton would be kg meter per second square, okay? And that is its base unit as well, okay? Because you know that अगर तुम second वाला formula देखो तो second वाला formula से mass in kgs, acceleration in meter per second square, right? And if you use the first formula, so first formula says that change in momentum, okay?
change in momentum meaning, okay, the change in a quantity will also have the same unit as a quantity itself, okay. So quantity का जो unit है वो तुम्हारे पास है kg meter per second, okay. तो change in the quantity का भी ये वही unit होगा, right? kg meter second negative one, right? And you have the time in division with a unit second, okay. When you take that second up, right, दिस सेकंड बिकम नेगेटिव, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर न्यूमरेटर की चीज तुम डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो पावर नेगेटिव वन हो जाती है, डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में लेके आते हो तो पावर नेगेटिव वन हो जाती है, राइट? यू शुड नो दीज रूल. दिस इज समथिंग दैट यू गाइस शुड स्टडीड इन योर indices and search in your O levels, okay? So yes, okay. So you'll end up getting the same thing from the two different formulas, okay? So always keep in mind, if you have the same quantity but it is connected with the different formulas, then it will always get, you'll always get the same overall base unit, okay? Please keep in mind that, okay? Clear? Okay, so the fourth quantity is, after force, let's consider, okay, so अगर हम ले लें एनर्जी ले लेते हैं, और एनर्जी से पहले वर्क डन ले लेते हैं, चलो। किसी को वर्क डन का डेफिनेशन आता है भाई? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस आप कह रहे हो? बेसिकली हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं भाई, सही है। फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, work done is equals to force times displacement, okay. Can you guys tell me the unit for the drive unit for the work done is the joules, okay? Name after the scientist, okay? ये जूल्स, न्यूटन, वॉट, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट का एच, ये सारे जो है ना साइंटिस्ट के नाम है, ओके? सो प्लीज कीप इन माइंड दैट, ओके? कैन एनीबडी टेल मी द बेस यूनिट ऑफ द वर्क डन? You know the base unit of the force, you know the base unit, or you know that S being the displacement. So can you work out for the work done unit, please? केजी एमएस माइनस वन। If you are saying your voice is quite low, but I can, what I understood is kg m squared एम s एस squared, right? नहीं, Okay. केजी एम एस सर, माइनस। Yes. जी भाई बोलिए। फोर्स का एफ इक्वल्स एम ए तो नहीं होता वो फॉर्मूला? बिल्कुल होता है भाई। तो अच्छा नहीं, नेवर दो माइंड। फॉर्मूला होते हैं, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम, एंड देन उससे हम वो एम ए बनाते हैं, राइट? जी जी जी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सर सेकंड का माइनस टू कैसे हो गया? ये वो -2 होता है ना, फोर्स पे -2 है ना। देखो ना, फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट? और एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी पे सेकंड नेगेटिव वन होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होता है मीटर के अंदर, और टाइम जो है वो सेकंड के अंदर होता है। जब सेकंड को आप ऊपर लेके जाओगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, राइट? एंड देन अब आप जब एक्सेलरेशन के लिए निकाला आपने, सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है मीटर्स पर सेकंड, राइट, ओवर टाइम इन सेकंड। जब आप टाइम को ऊपर लेके जाओगे, सो विल गेट मीटर सेकंड नेगेटिव वन एंड सेकंड नेगेटिव वन, यू विल ऐड बोथ द bases, both the powers as the bases are same. So मीटर सेकंड नेगेटिव टू हो जाएगा भाई, समझो? जी जी जी। वेरी गुड। ओके, अब वही चीज मास फोर्स के अंदर इस्तेमाल, वर्क डन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, फोर्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है, राइट? अच्छा, नाउ वी हैव kinetic energy, okay. Kinetic energy is having the formula of half mv squared, okay. The drive unit of the kinetic energy is also joules, okay, and the base unit is also the same, okay. Okay, there is this is the possibility that if you have the different quantity, like by name, by concept they are different, but like by calculation if they're same, so their unit will also be the same, okay. अच्छा जी, now 7,
is going to be your gravitational potential energy. Can anybody recall that formula, please? gravitational potential, Yes. mgh. Very good, bhai. mgh. Okay. Since this is also the energy, so its unit will also be in the joules. Okay. And the base unit remains the same. You can work out at home कि अगर जो है ना जैसे मास है वो केजी के अंदर है, राइट? ग्रेविटी है, दैट इज एक्सेलरेशन बेसिकली, सो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और एच जो है वो हाइट है, तो मीटर, so meter and meter add up, so you'll get meter squared, and then yes, okay. We also have another energy, that is elastic potential energy. Mm. Okay, the elastic potential energy is basically, किसी को याद है फॉर्मूला? 1/2 into force times mg x, राइट? कौन सा भाई, क्या बता रहे हो? मैं समझा वो दूसरा काइनेटिक। नहीं नहीं। ओके, एंड ये इसका भी यूनिट जूल्स की रहेगा, एंड बेस यूनिट जो है वो इसका भी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव 2 रहेगा, राइट? अच्छा जनाब, नाउ सो एनर्जी हो गई, पावर पे चलते हैं। सो पावर का जो यूनिट होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली एनर्जी ओवर टाइम होता है, बाय द वे, ओके? एनर्जी ओवर टाइम, सही है। एंड पावर मेजर इन वॉट, अगेन द वॉट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ओके? But can you guys tell me the unit of power, please? It is very common in the exam questions. Okay, वो तुमसे बोल रहा है कि use the definition of power to find the units. Yes, anybody? joules per second। Joules per second. Joules per second is the drive quantity. Joules needed to be in the form of kg, meter, and seconds. Okay, like देखो जो भी base units होंगे ना, जो भी base units होंगे, and the base unit should be in these units. Okay, किसी भी quantity का base unit जो है ना वो इन 5 quantity के अलावा नहीं होना चाहिए। था, समझ रहे हो आप? Right? And since joules is not a part of this base quantity, so you're not allowed to give the answer in the form of joules. Okay. But if you're saying, let's say joules, let's say if you're saying joules per second, so you know that the joules is basically equivalent to kg meter square second negative 2 divided by second in s. So that gives you meter square s negative 3. Is that clear, guys? Okay. अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। सर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ईपीई इक्वल्स 1/2 एफ एक्स है। एफ जो है वो फोर्स है, एक्स जो है वो एक्सटेंशन है, या ई भी ले सकते हो तुम, ई इज एक्सटेंशन। और सही है, ये अभी तुम लोग ने ओलेवल्स के अंदर नहीं पढ़ा हुआ है, दिस इज समथिंग न्यू। ओके, ओवर हियर वी डोंट यू यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द एक्सप्लेनेशन, अभी तुम टेंशन मत लो। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज डाउन जो भी ए एस के अंदर है, राइट? और मैं उसकी यूनिट निकाल दे रहा हूँ, राइट? इफ यू डोंट नो द क्वांटिटी नेम यू कैन आस्क मी, ओके? बट अगर कोई तुम्हें सेंस नहीं बना रहा है देन डोंट वरी, ओके? और ये हर कोई जो है ना, हर कोई क्वांटिटी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अपने अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, ओके? काइनेमेटिक्स के लिए जो है ना फोर्सेस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अलग चैप्टर है, फोर्सेस का अलग चैप्टर है, एनर्जी के लिए सारी एनर्जीज एक चैप्टर में आएंगी। सो ये पावर के साथ, सो डोंट वरी, ओके? फॉर नाउ वी आर जस्ट राइटिंग डाउन द यूनिट्स, ओके? अच्छा जी, पावर हो गया। अच्छा जी, अगर हम देखें मोमेंट को, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ओके? द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली,
and the base unit and its base unit drive unit is going to be Newton meter, but its base unit is going to be the Newton times the meter, which is kg meter square second negative 2, right? Now you can see that the energy and the moment has the two same units, okay, but they're actually related with the different concepts, okay, right? So please keep in mind, two different quantity can share the same unit, okay. A quantity that have the two different formula can share the same unit, okay, but you have to explain it, or you have to justify it, or you should know which thing is correct and which thing is incorrect, and which is referring to which quantity and which is referring to which quantity, okay. So हो गया, so moment हो गया, and after that we have mm, 11 11. Okay, so we have the Sphinx constant, okay, Sphinx constant, okay, and the Sphinx constant has a form. You should remember the formula for the Sphinx constant. Yes, anybody? F upon x. F of 1x, very good. K is equals to F over x, or x over E, okay, and over here, okay, so the unit is going to be the meters, newtons per meter, and the base unit is going to be kg meter, sorry, no meter, and second negative 2, okay. Because for the force you write kg meter second negative 2 and divided by x is in meter. So this meter and that meter goes off, and you are left with kg second negative 2, right? अच्छा जी. Now 12, we have the stress, a new quantity to you, but it is the same as the pressure, force upon area, okay. And you should know that the area is basically length time breadth, so it is a meter square. So the stress has a formula, the unit is meter Newton meter negative 2, right? And this is also same as the pascals, okay. Pascals, okay. It is again the scientist name, okay. And if we try to find out its base unit, so हमारे पास base unit आ जाएगा, वो आ जाएगा kg meter second negative 2 divided by meter square, okay. So when you try to simplify it, so you will get kg meter negative 1, because I'm taking the meters, the meter, the 1 meter in denominator in the numerator, and second negative 2, right? And the stress and the pressure shares the same unit, okay? Okay. Yeah. We have the other. Okay. अच्छा, तुम लोग को आवाज आ रही है? कॉल की आवाज आ रही है? कॉल है? कौन? नहीं आ रही है, बस सही है. कौन सी कॉल? अच्छा जी. So now we have another quantity. Wait. Copy and paste some other quantities. Paste. Okay. Right. Acha. So stress is done. Okay, we have another quantity called strain. Strain. Okay. It is also the new quantity to you. Don't worry. Okay. And that has a formula. The original extension over the original length.
original length. Okay. And since अरे यहाँ पे ओरिजिनल लिखना जरूरी है क्योंकि हर जगह तो लेंथ दूसरी लगेगी। आवाज नहीं आ रही है ब्रो। यहाँ पे ओरिजिनल लिखना जरूरी है यहाँ पे लेंथ दूसरी। ओरिजिनल लेंथ और एक्सटेंडेड लेंथ दोनों, या एक्सटेंशन और ओरिजिनल लेंथ जो है वो दोनों एक ही यूनिट में है। ओके, दोनों का यूनिट सेम है। सही है, मुझे आपका जो सवाल समझ में आया है टाइप कर लो प्लीज। सही है। बट खैर, मुझे जो सवाल समझ में आया कि अगर एक्सटेंशन और ओरिजिनल लेंथ, यार ये मेरे माइक में मसला हो सकता है, फिर एक सेकंड देना प्लीज। ओके। ओके, आई एम करेक्ट। माइक तो सही है। खैर, तो एक्सटेंशन ओवर द ओरिजिनल लेंथ, अब देखो दोनों सेम है तो नो यूनिट। नो यूनिट। ओके। Kindly keep in mind, if in the question, if they mention that a quantity is having no unit in the formula, then you can replace that quantity with one. Okay. Okay. Quantity with no unit in the given relation should be replaced by one. Okay. Right. So please keep in mind, ये वाली चीज बहुत important. Okay. Now, एक और quantity देख लेते हैं भाई। We have the young modulus. Okay. We have the young modulus. Okay. The formula for the young modulus is basically the ratio of the stress over the strain. Okay. And the stress is this one. And the strain has no unit. So the young modulus will overall going to have the same unit as the stress. Okay. Okay. So it is going to be the same in unit, pascals, PA, and yes, same unit. Okay. And kg meter -1 s -2. Okay. Now, you can consider the unit for the sorry, 14, the density. Okay. And density हाँ is सही going to है। be very good. Mass upon volume. Okay, mass should be in kgs and volume should be in meter cube -3. Okay. So meter -3. Okay. The same thing is right here. सही हो गया। और इसके अलावा हमारे पास, अच्छा प्लीज कीप इन माइंड कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है और जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है विच इज ग्रेविटी, बोथ शेयर्स द सेम फार्मूला। ओके। बोथ शेयर्स द सेम फार्मूला, राइट? द सेम बेस यूनिट बेसिकली, नॉट द फार्मूला। ओके। अच्छा। डेंसिटी तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास अपने जनरल फिजिक्स के अंदर कोई यूनिट नहीं बचता है, राइट? और चलो बस अब यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं, राइट? अब कल की क्लास में वी हैव टू कंसिडर ऑल द यूनिट फ्रॉम द वेव्स एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। ओके। And then we'll do some of the question tomorrow, and then the first part of the chapter will be done. Okay. This is the first thing. Okay.
ये आपके पास जो है पहली चीज है, राइट, जो कि हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एंड देन हम स्केलर वेक्टर पे आएंगे। दिस विल आल्सो टेक 1 क्लास, एंड देन वेक्टर कैलकुलेशन टेक 2 क्लास। ओके, prefixes again take like minutes. Okay, and uncertainty will be larger. Okay. Okay, सर, बोलिए। जो अभी फिजिकल क्वांटिटी अभी जो टेनिस में हमने एक दो फॉर्मूला किए हैं जो ओ लेवल में नहीं किए, वो अभी से करने हैं। देखो वो जो फॉर्मूलाज आपने ओ लेवल्स में नहीं किया वो आपको अभी नए लग रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, वो बेसिकली अपने चैप्टर्स के अंदर आएंगे दोबारा से। ओके, अभी यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ऑल द फॉर्मूलाज दैट आर इंक्लूडेड इन एएस लेवल और जो मुझे याद है। ओके, ये सारे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, राइट। बट व्हेन वी डिस्कस काइनेमैटिक्स, हमने ये वाले फार्मूलाज देख लेने हैं। मोमेंटम के अंदर मोमेंटम देख लेंगे, फोर्सेस के अंदर एक्सेलरेशन फोर्सेस देख लेंगे, वर्क डन एनर्जीज के अंदर ये चीजें देख लेंगे सारे, मोमेंट के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर वो सब सारे सारे फार्मूलाज आ जाएंगे। ओके, सो फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू राइट ऑल द थिंग्स डाउन। बोलो क्या बोल रहे हो? अच्छा जी, तो बस यहाँ तक जो है ना वो आज की क्लास रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है ना फिर इसके सारे यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, चलें, बस। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।